Oh, so dear students, in our last class, we discussed about cell, the overall idea of a cell. In the chapter of cell, what we are going to discuss, that we understood in our earlier class. Now we will go through the chapter in details. Look into your notes I have given. I have given this topic, the number of cells present in an organism. So depending upon the number of cells in an organism, it is mainly of two types, unicellular and multicellular. Unicellular is that type of organism which have only one cell, but multicellular is that type of organism which have multiple cell or more number of cells within its body. So these words are not actually new words. We have already discussed these words in our earlier chapters. जो पूर्व पाठ गुड़ाक आम पढ़ीचे चैप्टर गुड़ा पढ़ीचे से पाठरे आम सब डिस्कसन करीचे ए वर्ड्स गुड़ाक विषय मल्टीसेलुलार कौन यूनिसेलुलार कौन प्रोकारियोट्स कौन यूकारियोट्स कौन ए सब जिनस गुड़ाक आम पढ़ीचे आ तार सब रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स गुड़ाक मध्य दिया हैचे एमोइबा पारामेशियम क्लामाइडोमोनास यूग्लिना गुड़ा सब कौन एमोइबा पारामेशियम दीज आर प्रोटिस्टा जोटा कि प्रोटोजोआ कैटेगोरी रे आसीबो क्लामाइडोमोनास यूग्लिना डा कौन गोटे प्रोटिस्टा कैटेगोरी रे आसीबो यूग्लिनॉइड्स यूग्लिनोफाइटा क्लामाइडोमोनास कम्स अंडर अगेन दिस algae थैलोफाइटा कैटेगोरी रे आसीबो देन बैक्टीरिया वी अंडरस्टूड देन BGA blue green algae we have studied this one cyanobacteria blue green algae in second chapter eso पढ़िचे आमे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे सो वर्डिंग्स जाको आसीची. Then myxobacteria, it is bacteria only but having little fungal characteristics माने फंगी भलिया रे किछि characteristics रहिबो bacteria only. तो एडा सब मल्टीसेलुलर कैटेगोरी रे आसीबो. ब्लू ग्रीन algae मते मल्टीसेलुलर मेंटेन करे. Some blue green algae are multicellular, some are unicellular also. तो आउथरे तार डिटेल्स अछि जोडा कि हम +2 लेवल रे दरकार नै. Then protista पढ़िले human, plant, animal. These are nothing but the basic idea what we have been discussing in our earlier chapters. Then we understood what is cell. It is nothing but the building block of every living organism. And discovery of cell, we will understand who are the scientists who have a major role and primary role to discovering cell and cellular aspects. Cell विषय रे किंबा exactly cell को कौन सी जदि के discover करिछथि से माने साइंटिस्ट नाडा बुझिबा. रॉबर्ट हुक who has discovered cell, actually cell को सी आइडेंटिफाई करथिले डिस्कवर करथिले सोसाइटी आगे जणैथिले व्हाट इज सेल एक्चुअली इन 1665. एडा सब वन मार्क पई टिके इंपोर्टेंट साइंटिस्ट मानकर ना तो टिके मन रखियो पड़िबो. He viewed the thin cutting of cork like structure and discovered cell. माने सी जेतलो लिविंग पार्ट रो सो कटिंग गुडा देखिले से प्लांट हो किबा एनिमल रो मध्य मांस खंड व्हाटएवर तो सेटा से माइक्रोस्कोप रे भी ऑब्जर्व करि चंदी कि नॉर्मल ईयर देखले मध्य कॉर्क गुडा केमिति रहे. कॉर्क माने कॉर्क यू हैव सीन माने छोटो छोटो स्मॉल होल गुडा थाए जेमिति रैकेट कॉर्क तमे देखि थिबो तार बैक साइड रे छोटो छोटो सब टिके स्पंज टाइप रो किबा सोलो टाइप रो कॉर्क दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क. तो स्मॉल होल्स विल बी फाउंड देयर. तो छोटो छोटो जो होल गुडा देखा जाए नोट्स रे देइची से होची कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर. सेल गुडा का मध्य सिमिति ही कि एडजेसेंट ऑल मेनी सेल्स आर फाउंड एंड विजिबल एज ए कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर जोड़ा कि overall इसे देखी चंदी. But when some other scientists have gone through that cell in deeply, तो deeply देखिले
कि सेल रो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही की अछि कि छोटो स्मॉल कर्व भलिया नाही तो एटा से पर ये हेले तो कौन रिजेम्बल्ड हनी कम्ब स्ट्रक्चर हनी कम्ब बोले कौन जो महुमाछी घरा तमें देखीच केबे गाँ गहली कि रास्ता कड़े केतल महुमाछी महू काढ़ा टाइम रे नेचुरल महू जो बाहर थो सब किसीटा लोक ट्राइबल लोक से नेचुरल हनी को काढ़ती तांकर महुमाछी जो घरा जो रहे महुमाछी जो घरा जोटे कि हनी भी सर्वाइव करे जो भितर तो से ये रे कौन रहे कि हनी कम्ब स्ट्रक्चर माने महुमाछीर छोट 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 घरा भाया रे स्ट्रक्चरटा होता है तो से टाइप रो देखा जाए सेल गुड़ाक सब ओके रिजेम्बल्ड हनी कम्ब स्ट्रक्चर टर्म्ड दीज स्पेसेस एज सेल माने स्मॉल रूम ए जो छोट छोट स्मॉल स्मॉल स्पेस को सेल बोली कहा जाए तो इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक जी कि रॉबर्ट हुक 1665 रे डिस्कवर करथिले सेल को बिफोर हिम एंड बिफोर दिस ईयर नोबडी नोस अबाउट सेल देन रॉबर्ट ब्राउन in 1833 discovered nucleus within the cell. There is a special compartment called nucleus, a special cell organelle called nucleus which is found within the cell and carrying the genetic material within it. Who has discovered? Robert Brown. तापर शेल्डन स्वान proposed cell theory. Cell theory कौन? सेल दा कौन डिस्कवर करदे टिके ब्रीफली आइडिया देले बट सेल रो किछिटा फंडामेंटल कांसेप्ट सेल थ्योरी रे अछि से सब फंडामेंटल कांसेप्ट माने सेल विषय रे पूरा फंडामेंटल आइडियास किछिटा फंडामेंटल आइडिया को क्लैरिटी किए देले शेल्डन और स्वान बोली दुई जण साइंटिस्ट Now we will see what is cell theory. It was formulated by two German scientists, that is Selden and Swan. Important ना गुड़ाक ये साइंटिस्ट मानकर ना निहाती मन रखा दरकार जो साइंटिस्ट मान विषय आम बर्तमान डिस्कसन करुचे तो सेल्डन एग्जामाइंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट टिश्यू प्लांट उपरे बहुत एक्सपेरिमेंट करियाटा सहज इंस्टेड ऑफ एनिमल कारण एनिमल रो लाइफ बड़ कोऑर्डिनेटेड लाइफ सेंस ऑर्गन्स अच्छी नर्व सिस्टम अच्छी तो एगुड़ाक सब टी सेंसिटिव रहे से एक्सपेरिमेंट एनिमल उपरे भी बहुत ही बट कंपेयर टू प्लांट एनिमल उपरे बहुत कम एक्सपेरिमेंट हुए प्रथमे प्लांट उपरे हुए सब प्रकार ऑर्गेनिज्म उपरे हुए लास्ट को से माने एनिमल दैट टू ह्यूमन उपरे एक्सपेरिमेंट करते ता आगुरु से माने किछिटा अदर ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंट करी प्रथमे क्लैरिफाई हुअन्ते So Selden examined a large variety of plant tissues and observed that all plants are composed of different type of cells. एटा Selden कहिले सबु प्लांट गुड़ाक डिफरेंट टाइप रो सेल द्वारा कंपोज्ड होइचंती and Swan examined different variety of animal cell. Swan animal cell उपरे एक्सपेरिमेंट कले से देखिले कि one animal composed of lot of examinations they have done बहुत किछ एक्सपेरिमेंट से माने करिचंदी तापर रुडोल्फ वर्च्यू इंपोर्टेंट ना वर्च्यू बोली मन रख ना रुडोल्फ वर्च्यू in 1855 underline this name of this scientist proposed that cells arise from pre-existing cell गोटे सेल टे गोटे सेल रु ही बाहरुची जोटा कि आमे पढुचे व्हाट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस What we are studying in mitosis कि a cell will develop a new cell okay तो सब बड़े सेल गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रो these are the postulates of cell theory तो एटा मन रखिबा दरकार it is important short notes and 1 mark also तो these are the cell theory states that कौन कि cells are the structural and functional unit of life this is one postulate one point of cell theory all organisms are made up of cell this is second one all cell arise from pre-existing cell
माने गोटे थिबा सेल रो ही नुआ सेल तैयारी हुए एगुड़ा सबू सेल थ्योरी रो पोस्टुलेट So now the next postulate is cell interact with each other which results in the organism's functions. इठे कौन से देखिले कि every cell, no doubt organisms, the multicellular organisms which have more than one cell, each cell interact among each other. If they do not interact, how the organism's body will function? No. So the next postulate is basic chemical composition are more or less same in all cell. माने every cell रो cell wall जदि अच्छी cell membrane अच्छी किंबा nuclear membrane अच्छी किंबा mitochondria अच्छी. So these are there are many things in the cell whose compositions are almost all किछिरा similarity रोची same रोची हला माने सेल मेम्ब्रेन तो सबुथिरे अछि किंतु सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन सेथिरे किछि लिपिड्स रहिबो किछि प्रोटीन रहिबो सेथिरे सिमिलरिटी एवरी सेल रो सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन ऑलमोस्ट ऑल टिके सिमिलर रहउछि द सेल व्हिच हैव सेल वॉल सब सेल रे तो सेल वॉल रहउनी बट सेल वॉल जो सेल रे रहउछि व्हिच एवर सेल हैव अ सेल वॉल द कंपोजिशन ऑफ दोज सेल वॉल are almost similar बोली कुआ होची सिमिति I have given the example. So इडा होची concept गुडा को सब cell theory रो. Then we will understand what are the types of cell, the overall things we have studied. The compartmentalizations of cells are called as cell organelle. माने compartmentalizations माने कौन cell भितरे inside the cell within the cell there are some individual specific compartment किछि जोड़ा कि cell organelle बोली कहउछन for example mitochondria chloroplast nucleus everything is specific किछि function करूछि और specific structure maintain करूछि. Then cell type जोड़ा कि prokaryotic cell बोली कहउछंती और eukaryotic cell according to cellular complexity. माने कौन देखिबा बेस्ड ऑन इंटरनल सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी माने सेल स्ट्रक्चर बेसिस रे दे आर ऑफ टू टाइप्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर सेकंड चैप्टर दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल. प्रो मींस प्रिमिटिव ओके कैरियोट मींस न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस व्हाट द न्यूक्लियस इट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं जैसे में न्यूक्लियस नहीं बोली कहते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेहेतु नहीं न्यूक्लियस मध्य प्रोमिनेंटली विजुअलाइज हो पारु नहीं से प्रिमिटिव बोली कहले. तो कौन रोचे से न्यूक्लियॉइड रोचे न्यूक्लियस भितर जो कंपोनेंट रहिवा कथा व्हिच इज कॉल्ड एज डीएनए और जीन दैट इज फाउंड बट न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट. But in the case of eukaryote, nucleus and nuclear membrane is found. तो गोटे सेल रो जदि न्यूक्लियस देखा जीवनी से टिके सिंपल देखा जीवो बट द सेल व्हिच हैव न्यूक्लियस ता भितर कॉम्प्लेक्सिटी आसीबो स्ट्रक्चरली फंक्शनली यस और नो सेथि पई eukaryote is more complex than prokaryote. Membrane bound cell organelles are absent, nucleus is absent. तो न्यूक्लियस ही नहीं आ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ओके गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हाउ दिस विल बी फाउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स जीन विद इन इट. If that nucleus and nuclear membrane is not there,
how the other membrane bound organelle will be present? No, the other membrane bound organelles are absent. See, absent रहिबो. Example रहला कौन? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया. हमें पढ़ीचे what is bacteria, what is archibacteria, eubacteria, all those things we have studied. Then eukaryotic cell, the membrane bound cell organelles are present, nucleus is present, cell compartmentalization माने cell organelles are present, माने membrane bound cell organelles are present. Okay, membrane bound nucleus is present, nuclear membrane is present, locomotory and cytoskeletal structure are present. Cytoskeletal structure माने जिमिति आम बॉडी पे skeleton, because skeleton is there within our body, therefore we can locomote easily, one thing. Second thing is there are arrangement of different organs is possible because of presence of skeleton. Skeleton अच्छी बोली different type रो organ गुड़ाक arrange ही की systematically अच्छंती आम भितरे. जदि skeleton न थांदा आमे गोटे मांस पिंडुला ही थांदे. ब्रेन टा केतळ ऊपर थिला आडू केतळ गोड़ पाखु पळांता, हार्ट टा केतळ आसी कान पाखरे झुली थांदा. ए सो प्रॉब्लम ही थांदा. इफ स्केलेटन लंग्स टा निश्वास नेबा आडू आ निश्वास एठी न जाई गिरी पाद पाखरे जाउ थांदा, निश्वास जागो पादडा फुलु थांदा, छाती न फुली की कारण लंग्स टा पाद पाखु पळेछि. हाउ इफ skeleton is not there, the problem will be happening like this, yes or no? पेटर खाइला पेट भर्ती है आड़ू खाइला आड़ू मुंड फुली जाऊँ कहीं पेटा मुंड पाक पलि ब्रेन टा पेट बहु पलि आम सब प्रॉब्लम होता. टू एवॉइड दिस प्रॉब्लम गॉड और नेचर हैज गिवन अस स्केलेटन. स्केलेटन थिबा जो गोटे तो आम मुवमेंट कर पारुचे, चली गला आड़ू गड़ी गड़ी पड़ोने आम प्रॉपर मुवमेंट हो. एवरी स्केलेटल बॉडी हैव देयर ओन पैटर्न ऑफ मुवमेंट बिकॉज ऑफ स्केलेटन. नहले कौन होता आम चलिया वाला गड़ी पड़ था, गड़ी गड़िया पड़ते आम ठिया हवा आड़ू उल्टी पड़ था बिकज वी डू नॉट हैव स्केलेटन. आम गोटे मांस पिंडुलाटे बॉलटार कौन बॉल छिड़ा हम कौन गड़ो कौन कथा गोटे हो जाऊँगी. जुआड़े ठेले टिके मुव है माने तार किसी डायरेक्शन न था, एनी डायरेक्शन रे से मूव कर जाऊँगी. यस और नो? स्केलेटन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एज वेल एज arrangement of different part within the body. सिमिति बॉडी रो स्केलेटन जिमिति काम करूची, सेल रो स्केलेटन को साइटोस्केलेटन बोली कहले. साइटो मीन्स सेल. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. सो सेल, द स्केलेटन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन. एंड हाउ द स्केलेटन ऑफ द बॉडी इज फंक्शनिंग, द सेम वे स्केलेटन ऑफ सेल इज आल्सो फंक्शनिंग एंड हेल्पिंग द सेल. सेल को प्रॉपर शेप साइज स्ट्रक्चर देबारे हेल्प करूची साइटोस्केलेटन. एंड सेल भितरे विदिन द सेल द डिफरेंट organelles अच्छी different particles are there. They should be located specifically and there should not be any disturbance or damage किछि हबनी. How? Because the cytoskeleton is there. So cytoskeletal structure गुड़ाक generally कोड रहे eukaryotic cell रे रहे. Then genetic material is well organized. माने eukaryotic cell रो genetic material गुड़ाक टिके systematic organized हबो. जिमिति कि plant cell and animal cell have a chromosome, means because these are higher living organisms, and eukaryote and the genetic material are actually composed to form a chromosome. Kintu if you see protista and fungi, no doubt they are also eukaryote, but they do not have much complex genetic material compared to plant and animal. Kintu bacteria apeksha, bacteria is prokaryote, bacteria genetic material is very small and simple, but compared to bacteria, the eukaryotic protista and fungal
genetic material is more complex and organized, okay, systematic. So Protista, fungi, plantae, animalia are eukaryotes, but only bacteria is prokaryote. Then what is the topic? See, slide गुड़ाक टिके साइज रे रहीनी बोली एगा टिके एपट सेपट होउची तापर टॉपिक टा कोन सेल रो साइज, सेल साइज, ओके सेल साइज टा कोड रहिला this is the cell size, okay. The cell exists in a variety of shape and size, different type of shape and size ro cell achi, and size is measured in terms of centimeter, millimeter. असोटी मन रखिया जिनस बुझा जिनस विशेष किछि नाही, but in microorganisms the measurement is made in the microns, माने micrometer. टिके जान दबा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर भितरे कौन डिफरेंस अच्छी. माइक्रोमीटर मीन्स माइक्रॉन जोटा कि म्यू रिप्रेजेंट हुए, एंड नानोमीटर ताठरी स्मॉल होची नानोमीटर. तापरे एंगस्ट्रॉम, डिग्री एंगस्ट्रॉम जोटा कि एक्चुअली नानोमीटर और डिग्री एंगस्ट्रॉम डीएनए रो मेजरमेंट, डीएनए रो लेंथ, डीएनए रो द हेलिकल डीएनए structure is there, that helix ro diameter, helix ro length, helix ro turn, all these things are actually measured in the form of nanometer and degree angstrom. So this degree angstrom is the smallest unit for measurement in this case, and so we will see what are the relationship among them. See, 1 centimeter is equal to 10 millimeter is equal to 1000 micrometer. Okay, भलारे verify करो. एटा 1 millimeter mm is equal to 1000 एटा micrometer mu m. Okay, 1 millimeter जेतो 10 millimeter 10 mm is equal to 10,000 mu m माने micromillimeter. Therefore 1 millimeter is equal to 1000 micromillimeter. Micro m माने micron mu will lekha eta lim hi jaichi, correct this mu m. So 1 mu m माने 1 micron is equal to 1000 nanometer. See how small the nanometer is. Then 1 nanometer is equal to 10 degree angstrom. So the smallest unit of this measurement in this case is degree angstrom. हम पढ़िया एडा सब तापर कंफ्यूज होबनी. तो रिमेंबर दिस थिंग्स एडा मन रखिया दरकार, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड. आमे परे आउथरे तो डीएनए विषय पढ़िबा, आरएनए विषय पढ़िबा, एंड मॉलिक्यूलर लेंथ व्हेन वी विल स्टडी, देन बायोमॉलिक्यूलर लेंथ, देन these parameters will come. ए parameter गुडा को डिस्कशंस हबो. Then come to cell size varies greatly in different organisms, and smallest cell की mycoplasma we have studied. This is the exclusively we have studied about this mycoplasma in chapter 2 biological classification. This comes under prokaryote. This is the smallest prokaryote and the smallest living organism on this earth. केते 0.3 micrometer in diameter ru, but other bacterial cell have 3 to 5 micrometer. Bacteria गुड़ा को generally 3 to 5 micrometer diameter रे रहे, but this mycoplasma है 0.3 micrometer in diameter. Largest animal cell की ostrich egg. Ostrich egg दा होची what single cell which is largest, about 20 centimeter in diameter. Important 1 marks and trans point of view रो, और plus 2 point of view रो मध्य.
site of plant fiber size, this is not site, टिके spelling mistake ହେଇଛି, size SIZD, size of plant fibers are larger than plant fibers गुड़ाक अच्छी जोरा कि जाइलम फ्लोएम आसीबो से सब ये रे कंडक्टिव ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू वास्कुलर टिश्यू तो से केस रे लेंदी से कौन तार लंबा बहुत ये कौन साइज रे बड़ अच्छी किंतु ये बहुत लंबा 60 सेंटीमीटर लेंथ ह्यूमन नर्व सेल हूँ लंगेस्ट केते लंगेस्ट नर्व सेल 1 to 2 मीटर सबुठु लॉन्ग हूँ ह्यूमन रो नर्व सेल जोड़ा कि 1 to 2 मीटर माने मुंडरू आरंभ करी दरकार पड़ले टोज पर्यंत पाद पर्यंत लंबी थाई पारे देन ह्यूमन आरबीसी जार कि अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इमती इंपोर्टेंट सेल गुड़ाकर टिके साइज विषय आम डिस्कसन कले नॉट ऑल द सेल then come to shape of cell रे कौन होची different shapes are there different cell performing different function and they have different shape जिमदी elongated माने लंबा round concave oval cuboidal circular spherical you know all these the meaning of these things spherical माने ball shaped हेइथिबो circular माने round shaped हेइथिबो cuboidal cube shaped हेइथिबो concave oval ए सब जिनस गुड़ाक different cell रो shape size अच्छी according to their shape and size they are functioning differently so classification of organism is based on number of cell अनुसार हमें देखले few are unicellular few are multicellular complexity basis रे cell are divided into two classes prokaryote and eukaryote then what is the topic there fine then we have studied what are the common characteristics of eukaryotic cell हमें पढ़िले eukaryotic cell रो common characteristics कौन तापर then we will come to some tools and techniques by which we can observe cell in details within the cell we can observe what are the things found within the cell the light microscope electron microscope light microscope is the ordinary general microscope by which we can view cell and we can view within the cell also but not in details but electron microscope is actually providing detailed magnified view which is actually regarding the cell in details what are the cell parts or compartments are found within the cell that we can see so U shaped horizontal base these are the things it is not much important but you just understand that this light microscope means it is not much complicated it is very simple in structure and appearance and it is not providing detailed view we cannot see the cell in details by using light microscope but when you see the electron microscope you can visualize the cell within the cell in details okay every structure every compartment every particle of cell can be visualized very clearly by using this electron microscope आकु किए नॉल एंड रस्का एवडा सब कौन कर्व्ड आर्म लिम्ब एवडा सब I will show you the diagram of microscope then you can understand so part of microscope it is not much to understand दीटा साइंटिस्ट एक्चुअली इन्वेंट करथिले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस अच्छी जोड़ी की करंट यूज होची बट लाइट माइक्रोस्कोप रे सनलाइट रो कैप्चर रे यूज होची एटा करंट यूज होची प्लस मैग्निफिकेशन पावर बहुत रहउची मैग्निफाइंग लेंस गुडा का बहुत
multiple magnification lens rahuchi, so that we can see a very small cell in a large picture. Come to difference between unicellular and multicellular. These are composed, the body is composed of a single cell. Here the body composed of lot of number of cells. One cell will do all function within the body, because one cell is there in the body. In bacteria gote cell thauchi, one cell will do all the function of the body, but here several cell will do several different functions. Jimidiki we are multicellular. We have heart cell, brain cell, kidney cell, different cells we have, lakhs, thousands types of cells we have, and different cell will perform different function. So a single cell represent the whole organism, whole gote cell jaha organism taha kote unicellular case re, but multicellular case re gote cell gote organism ro part ko hi define karibo. Okay, the single cell define the part, a fraction mane part day, organism part day. Okay, kintu it a single cell jaha organism taha. The organism reproduce only once. थरे रिप्रोडक्शन करला पर इन बैक्टीरिया बडिंग करला, बाइनरी फिजन करला, बोले आउ ओरिजिनल बैक्टीरिया रहिला कि से अलग है गला, तो थरे रिप्रोडक्शन करले ओरिजिनल बैक्टीरिया, ओरिजिनल सेल और बॉडी विल बी लॉस्ट. किंतु इट कैन रिप्रोड्यूस सेवरल टाइम्स. जेनी मनीष थरे जन्म कला गोटे छुआटा को आउ गोटे जन्म कला, सिंधी गोटे आंब गछ गोटे जन्म करछि, आंब प्रति वर्ष सी आंब तैयारी करछि. So it can reproduce several times. Then reproductive organ is absent. एडे किछि reproductive organ बोली नहीं है, because organ हमें पढ़िले परा organ are multicellular. कौन से unicellular के तो organ अच्छी की कोठे, तो गोटे ही सेल और organ कौन रहइबो एठे. तो reproductive organ are present in this eukaryotic organisms. But reproductive organ अच्छी किंतु एडे सब sorry multicellular eukaryotic ने multicellular ये एथिरे रहे, मल्टीसेलुलर रे रहे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहे. बट फंगी रो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो किछ नाही, बट प्लांटी रो अछि, एनिमलिया रो अछि, को एनिमलिया को प्लांटी रो, हायर एनिमलिया प्लांटी. देन बीइंग यूनिसेलुलर द साइज ऑफ द इंडिविजुअल इज यूजुअली वेरी स्मॉल. तो यूनिसेलुलर गुडा का बहुत स्मॉल इन साइज रहउछन्ती, बट मल्टीसेलुलर आर लार्ज इन साइज, वेरीज छोटू बड़ा बहुत साइज पर्यंत मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल. ओके, then come to types of cell. We studied that prokaryote and eukaryotic cells are there. We understood all these points, so there is no need to discuss again and again. mu khali sequence re deichi. We understood what is prokaryote, we understood what is eukaryote. Briefly ame padiche sera lekha hai je, but we will see in details. एटा देखो prokaryote और eukaryote basic difference होची कोना कि prokaryote does not have nucleus and nuclear membrane, but eukaryote have nucleus and nuclear membrane. Eu means true, karyote means nucleus. True nucleus is there means nuclear membrane is there, nucleus is there. Prokaryote primitive nucleus means no nuclear membrane is there, therefore the nucleus is not prominent. But instead of nucleus, nucleoid is present. Nucleoid, I taught you in पढ़ेची तमको biological classification रे. Okay, biological classification रे जते बेले मु तमको kingdom monera पढ़ौथिली, I have given you the structure of kingdom monera. Kingdom monera रो जते structure देखैथिली सेठे मु discussion करिछि what is nucleoid, the portion where the genetic material or DNA of any prokaryotic cell is found within the cell. So that portion, specific portion is called as nucleoid. But that is completely different from nucleus, because the nucleus contain nuclear membrane, but nucleoid does not contain any membrane. It is simply a portion, a location जोटी की डीएनए अवेलेबल थाए. लोकेशन है खोला जगाटा गोटे घर भितर गोटे बॉक्स भितर तुम किसी रखिबो, तो बॉक्सटा हेगला मेम्ब्रेन बाउंड. किंतु गोटे घर भितर बॉक्स रे न रखी किसी से जो बही खाता तुम बॉक्स भितर रखीच,
तो बही खातार जेनेटिक मटेरियल बॉक्स आगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंतु किछिटा आउ गोटे घर अच्छी जो घरे तुम बही खाता गुड़ाक ओपन जगार रखीच बट गोटे निर्दिष्ट जगार ही रखुच तुम गोटे कर्नर टारे रखुच गोटे निर्दिष्ट जगार रखुच तो सेटा लोकेशन होगला गोटे पोर्सन होगला क्लियर बुझा पड़ा मुझे कौन कह सो यहीटा का बेसिक डिफरेंस रोचे आम डिटेल्सटा पर पढ़ा प्रोकार्योटिक सेल डेफिनेशन कौन द सेल इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस कहली जेनेटिक मटेरियल जोटा कि डीएनए और जीन एक्चुअली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा एनक्लोज्ड और सराउंडेड नहीं and are called as prokaryotic cell. So therefore they does not have a nucleus but they have a nucleoid. Remember nucleoid, nucleoid. These are found in membrane in members of kingdom Monera. Kingdom Monera are completely prokaryotic. They contain a naked nucleic acid means what? The nucleic acid is not surrounded by nuclear membrane. Therefore, the nucleic acid or DNA, nucleic acid means DNA, deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. Okay, so the DNA is actually not surrounded by nuclear membrane. Therefore, the DNA is naked DNA. Naked means khola, langala. So, prokaryotic cell occurs in bacteria, cyanobacteria, mycoplasma. Mycoplasma in other word called as PPLO means pleuropneumonia like organisms. Then we will understand the detailed structure of prokaryotic cell. Prokaryotic cells have these important structures. After prokaryotic cell we will understand about eukaryotic cell. तो consist of cell envelope. Cell envelope कौन cell रो बाहर पटर coating टा. The external coating, external layer of the prokaryotic cell is called as cell envelope. The cell envelope contains what? कौन कौन रोची cell envelope रे हमें पढ़िबा details. तापरे साइटोप्लाज्म जोड़ा कि इंटरनल पार्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सर सेल मेम्ब्रेन कहले सेल मेम्ब्रेन टा सेल एनवेलप रो गोटे पार्ट हो जाउची जोड़ा कि कैप्सिड और कैप्सूल रहिबो तापरे सेल वॉल रहिबो तापरे सेल मेम्ब्रेन रहिबो एमिति कि सेल एनवेलप रो गोटे लेयर्स गुडा को रहउची हला. तो सीमित रे न्यूक्लियोइड तापरे न्यूक्लियोइड बोले कोन कहली प्लाज्मिड कहली ये गोटे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल. ओके तापरे सरफेस एपेंडेजेस माने सरफेस एपेंडेजेस माने गोटे मेसोजोम टाइप रो किछिटा एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस इंटरनली मेसोजोम्स रहिबो एक्सटर्नली जिमिदि कि सिलिया पिलाई फ्लाजेला एसो एपेंडेजेस गुडा रहिबो दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एपेंडेजेस. ओके दैट इज यूजफुल फॉर लोकोमोशन ऑफ दिस थिंग्स. वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो प्रोकैरियोटिक सेल वी विल स्टडी इन डिटेल्स. देख सेल एनवेलप रे कैप्सूल रोची सेल वॉल रोची आउ सेल मेम्ब्रेन रोची. मु किछि जगह रे मध्य सेल एनवेलप को सेल वॉल आउ सेल मेम्ब्रेन ठू अलगा बोली कहउछन. अलगा नहीं एक्चुअली सेल एनवेलप टा को कैप्सूल बोली बड़े बड़े कहि दियंदी बट कैप्सूल टा होची आउटर सेल एनवेलप. एनवेलप बोले कोन है गोटे खोल. तमे जो चिट्ठी पठाउन के एनवेलप रे पठाओ बोले खोलडा सेटा गोटे कवरिंग टा. तो सेल रो जहाँ जहाँ कवरिंग प्रोकैरियोटिक सेल रो तीनटा कवरिंग अच्छी गोटे कैप्सूल हला तापरे सेल वॉल हला तापरे सेल मेम्ब्रेन. ओके बट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर आल्सो फाउंड इन अदर सेल प्लांट सेल इन सब थाए बट सेल कैप्सूल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल. ओके सेथि पई बेले बेले सेल एनवेलप को कैप्सूल बोली कहि दियंती बट cell envelope composed of outer capsule, middle cell wall, inner cell membrane. We will study, we will discuss all these things in details in our next class. So thank you very much for listening to my class.